तो एक बार फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैं एक्सरसाइज 8.1। आज हम करेंगे इसके एग्जांपल्स को और कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट क्लास में सीखा। तो जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं की है उसका लिंक लास्ट में आपको मैं दे दूंगा, तो आप उसको जरूर समझिए। एक्सरसाइज 8.1, और यदि आप इसकी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा नीचे आपको हमारे फेसबुक का, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे दे दिए। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पर सीधा चलेगा। एक्सरसाइज 8.1 की तरफ पढ़ते हैं, और हमने हमने इसके एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हमने शुरू किया था, और देखिए कितने हैं जो ब्लूप्रिंट गानी बोर्ड ने आपको भेजा हुआ है इस सेशन के लिए। वहां पर क्या है, वहां पर आपका जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको यहाँ पर कितने अंक मिलने वाले, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको यहाँ पर 6 अंक मिलने वाले हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से, ओके, तो 6 अंक यहाँ पर टोटल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक संभावना जो बन रही है कि 4 अंक का जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाएगा, और 2 क्वेश्चन जो रह जाएंगे 1 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो पिक्चर हमें क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर में 6 को अगर हम सीखते हैं तो यहाँ से हमें पूरे 6 अंक मिल सकते। तो लास्ट क्लास में हमने इन कॉन्सेप्ट को सीखा था, तो आज हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल को हमने सीखा था। चलिएगा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x and the line x is equal to 1 and x is equal to 4 and the x-axis in the first part. Axis, x-axis in the first part. ओके, तो ये जब कर्व है ये क्या हो गया, पैराबोला हो गया। ये हमारे पास है, ये हमारा जो है y स्क्वायर इज x। ओके, ये पैराबोला आपका बनेगा y स्क्वायर इज x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी लाइन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 1 एंड दिस वन लाइन इज x इज इक्वल टू 4। ओके, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा जो एरिया बनेगा वो ये बनेगा, ये एरिया है जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसकी तरफ। जो एरिया हमने फाइंड आउट किया, हमारा एरिया क्या होना चाहिए, हमारा एरिया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। इस एरिया को हमने फाइंड आउट कर, चलिए करते हैं इस पे काम। अब सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास आ चुका है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, एंड ये फर्स्ट लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड दिस वन इज एक्स इज इक्वल टू 4। ओके, अब सॉरी ये जो ये यहाँ तक करेगी ये वाला एरिया हमने जो एरिया निकालना है प्यारे बच्चों, वो कौन सा आ गया, ये एरिया नहीं निकाला, सिर्फ ये एरिया हमने फाइंड आउट। ओके, तो ये और ये, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं कि एक बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप आपने ली, ठीक है, आपने स्ट्रिप ये ले ली यहाँ से,
ये स्ट्रिप आपने लिख ली, इसकी विड्थ आपने dx के द्वारा नोट की, इसकी लेंथ जो है y, ठीक है। तो अब यहाँ पर द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to x and the line x is equal to 1 and x is 4, द एरिया ऑफ ABC, इसको नेमिंग हम कर लेते हैं, इसका नाम हमने दे दिया है दैट्स वन। ये आपके पास A आ गया है, ये आपके पास B हो गया, C एंड ABCD इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, सो अब हमने क्या किया, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC, ये एरिया हमारा क्या निकलेगा पहले, तो ये एरिया हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ ये क्या आपका 1 है, ये 4 है, तो 1 से लेकर और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 टू 4, और dx y इंटू में dx, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा। और y को आपने क्या करना है, y को इन टर्म ऑफ x सॉल्व कर लेना है। तो y स्क्वायर आपको क्या गिवन है, y स्क्वायर आपको गिवन है दैट इज x, y इन टर्म ऑफ x क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर x। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा दैट इज व्हाट इक्वल टू व्हाट 1 टू 4, 1 टू 4, और y को हम लिख सकते हैं अंडर x dx। ओके, तो x की पावर क्या होगी यहाँ पर, x की पावर आपके पास 1/2 होगी, चलिएगा इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ चुका है x की पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2/3 हो जाएगा। ओके, लिमिट 1 टू 4, दैट इज व्हाट पुटिंग लिमिट्स 2/3, 4 पुट किया, 4 की पावर 3/2 माइनस में 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3/2। ओके, दैट्स इक्वल टू 2/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 माइनस में 1। ओके, तो 7 14/3, 14/3 यूनिट्स, ये इसका आंसर आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y square is equal to 9x and x is 2 and x is 4 and the x-axis in the first quadrant। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पैराबोला y square is 9x square, y square is equal to 9x। ओके, ये हमारा पैराबोला हो गया। तो x की वैल्यू ये आपकी 2 हो गई है, x is 2 and x is 4। ओके, तो एरिया बाउंडेड बाय, ओके, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऊपर वाला, अब वो x एक्सिस हम लेंगे, ठीक है। तो जो एरिया हमने फाइंड आउट करना वो कौन सा, वो एरिया ये है। ओके, ये एरिया आपने फाइंड आउट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। चलिएगा फिर से इसको नेमिंग कर देते हैं। इसकी नेमिंग हमने की तो हमें क्या मिला, यहाँ पर आपने ए किया, ए बी सी एंड डी। ओके, सो एरिया यहाँ पर फाइंड आउट कर, the area of region bounded by the curve y square is equal to 9x and x is 2 and y x is 4 and the x axis
is the area A, B, C. Okay, this is the required area. Okay, this is our required area. That is what let the strip मैंने यहाँ फिर से यहाँ पर मान ली. Okay, और strip में there is a dx and this one is the y. Okay, so यहाँ ये पॉइंट क्या आएगा? There is 2 comma 0. Okay, and this one is the 4 comma 0. It means area is required from 2 to 4. 2 to 4 y dx. Okay, so again we solve for y in term of x. Y square is what? Y square is 9x. Okay, so y in term of x, y is equal to under root 9x. Okay, plus minus. So this one is plus minus 3 under root x. So replace the y 2 to 4 y in term of x, we take only positive, plus 3 under root x dx. Okay, so simply we can solve it. That's what 3, and this one is the x to the power 3 by 2 and limit 2 to 4, 3 by 2 divided by 3 by 2. Okay, equal to 2 by 3 into May 3, and putting the limit 4 3 by 2 minus May 2 3 by. Okay, so this we have 2, 4 का रूट किया तो 2 हो गया, 2 की क्यूब किया तो 8 हो जाएगा. 8 माइनस में ये आपका क्या होगा? ये आपका 2 रूट 2 हो जाएगा. ओके, so this is the required answer. 16 minus 4 under 2 square unit. This is the required answer. Simple है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Find the area. Find the area of the region bounded by the x square is equal to 4y, y is 2, y is 4, and the y-axis in the first. Okay, this time x square is 4y. It means x positive, negative, x positive, x negative, but y is positive. This one. Okay. So y positive है तो पैराबोला कुछ इस प्रकार बन जाएगा आपका. ये पैराबोला. This is the x square is equal to 4y. And y is 2. ये y आपका 2 हो गया. ये आपकी लाइन y is equal to 4 हो. ठीक है. And the y axis in the first quadrant. इस quadrant में आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है. This is the required answer. This area we have to find out. Okay. So first of all, do the naming. After naming, this we have A, B, C, and D. A, B, C, D. Okay. So take now the strip. Now Y.
This we take in the speed. Okay. So this is what? This is dy. This one is dy, and this one is the x. Okay. And this line is y is equal to 2 and y is equal to 4. So the area of ABC, area of ABCD is equal to, now see, from area, from this point to this point, okay, this is the 2, 2, 0, comma 2, okay, and this point is the 0, comma 4, okay. Now we write 2 to 4. Now x dy, okay. So this time x is given, okay. So x now in term of y, x in term of y, on the solving we have x square is equal to 4y, and x in term of y, x is equal to plus minus under root 4y equal to plus minus 2 under root y. Okay, so this we can write 2 to 4, and x in term of y, that is 2 under root y dy. Okay, this is what. So again integrating y power 3 by 2 divided by y power, 3 by 2. Okay, limit 2 to 4. Okay, simply we can solve the again. On the solving we have, so this we can write 4 by 3 and 4 to power 3 by 2 minus 2 to power 3 by 2. That's what 4 by 3, and this one is the 8. 8 minus 2 under root 2. Okay, so simply on multiplying we have 32 minus 8 under root 2 and divided by 3 square units. This is the required answer. Okay. Find the area of the region bounded by the ellipse x squared by 16 plus my y squared by 9 equal to 1, and the same function is here, x squared by 4 plus my y squared by 9 equal to 1. Okay, we can do any one question. Let's have the question number 4. Now this is the equation of a parabola. So ellipse is the equation of ellipse. So here we can get what is the x, putting y 0. So if we put y 0, x squared by 16 is equal to 1. So x is what? X is equal to plus minus 4. Okay. So this point we have 4 comma 0, and this one is the minus 4 comma 0. On the same way, on the same way, and this we have done. Now y square, by 9, putting x is 0 on the y-axis. Y is what? Y is equal to plus minus 3. So this one is the x is 0. When x 0, y is 3. X 0, y is minus. So now we have to find the area of ellipse. Ellipse, this area is required.
This whole area is the required area. Okay. So now see, we have how many parts? We have the four equal parts. We have the four equal parts in this question. If you find the area of this part and multiply by 4, then the required area we can get. Okay. So let this point is A, and this one is the B, and this one is the C and D. Okay. So area of the ellipse. The area of ellipse is what? It can be observed that the ellipse is the symmetrical about x-axis and y-axis. Okay. So area bounded by, we have to find the area. That is what? Area, that is 4 times of area OAB. O O A B. Okay. If we can find the area of this one and multiply with the 4, then we can get the required area. Okay. So let's have a strip on this list. This one. Okay. This one is the dx and this one is the y. Okay. Now required area is equal to what? Area of area of OAB, that is what? That is equal to, see, from here to, okay, so x is from 0 to 4 and y into dx, y into dx. Okay, so now we solve this is the equation for y in term of x. Okay, so x square by 16 is equal to y square by 9 is equal to 1. Okay, so now solve y in term of x. So y square by 9 is equal to 1 minus x square by 16. So y square is equal to 9. 9 into 1 minus square by 16, and y is equal to, the taking square root both side, 3 under root 1 minus x square by 16. Okay, so on solving we have taking the LCM. Y is equal to plus minus 3 by 4. Okay, this becomes 4 square minus
x square. Okay, now putting the value. Now putting value in this, we have 0 to 4. Okay, so 0 to 4 and y in term of x, that is y. 3 by 4 under root 4 minus 4 square minus x square dx. Now we can apply the formula. So it is equal to 3 by 4 x by 2. Okay, applying the formula 16 minus x square plus me 16 by 2 a square by 2. Okay, sine inverse x by a mean x by 4 limit 0 to 4, that is what equal to 3 by 4. Okay, put the limit on putting 4. If you put 4, then it becomes 0. 16 by 2, that is what, 8. Okay, 8 into me sine x putting 4, 4 by 4 1, 4 by 4 1, sine inverse 1 is what, that is 5 by 2. Okay, then minus, when we putting 0, this becomes 0 because x is 0, and then again this becomes 0. So simple, we can write this one only times 0. Okay, so what is the answer? That is 4 to the 8, 4 to the 8, 3 pi only, simple 3 pi answer. Okay, so this is the this one area of only one part. Okay, this is the answer of only one part, that is this one. Area of ABOA is 3 pi. Okay, so the whole area is what? The area of ellipse. So area of ellipse, that is the 4 times of 3 pi, becomes 12 pi square unit. Okay, so it is very simple. Similarly, we can find the question of fifth. Okay, find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis. Line x is equal to root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4. Okay, so this we have to find out. See, this one is the circle, this circle passing through the 0 0, and the radius is x square. See, this is the standard form, x square plus y square is equal to 2 square. Okay, so it means, this means the radius is 2 and circle passing through the center. So we can put it 0 0. Okay, and this one is the 2 comma 0. Okay, and this is the line where x is equal to under root 3 y. So what is the intercept point? This one. Now on naming, that's the name O A. So it take B, root 3 by 2, and this become 4 minus 3. 4 minus 3 plus 4 by 2 is 2 simply, and this becomes sine inverse.
Sine inverse root 3 by 2. Okay, that's what root 3 by 2 plus 5. 5 minus 1. 4 minus 3 is the 1 only. So this becomes minus root 3 by 2 minus. What is the value of root 3 by 2? Sine inverse. That becomes 60. Okay, so this we can write uh, 60, that is what? 2 pi by 3. Okay, so on solving, what we get? Root 3 by 2 plus and 3 pi minus 2 pi is pi, pi by 3 minus root 3 by 2. Okay, simply on solving we have pi by 3 units. Okay, here units. So this is the required. Okay, have you got? Okay, you may take the screenshot. Moving to next. Find the area of the smaller part of circle cut off by the line x is equal to a by root 3. Okay, so see, again the simple question is here. This is the equation of circle, that is x square plus y square is equal to a square. Okay, so we can say this circle passing through the center 0 0 and the radius is a, so we can write a comma g. Okay, and cut off by the line, this we taking the line, that is what? X is equal to a by root 2. Okay, so this we have to find out. तो इसमें हमने smaller part का लिया. Which one is the small? This one is the smaller part. Okay, this is the smaller part we have to find out. Okay, so we in the naming a, this one is the b, and this one the c, the center 4. Okay, so what is the required area? It can be observed that the area of ABC, ABC, and this taking the D, ABCD is symmetrical about x-axis, and the area of ABC, area of ABCD is what? That's required double of area A, B, C, A. Okay, so if we can find the area of this one, and we can do double. Okay, so see from which point this C is what? Equal to this C point is what? A by root 2. Okay, to A. Okay, y into dx is equal to a by root 2 to a, and y in term of x we can write a square minus x square and root a square minus x. Okay, so into dx simply. Okay, now we can apply the formula and we get the value. That is what?
Applying the formula x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by, okay, and the limit are upper is a, lower is a by root 2, okay, equal to what? Putting a, then a by root 2, putting a, this becomes 0, okay, when applying a, this becomes 0, and this becomes a square by 2, a by a, 1, sine inverse 1 is pi by 2. Now putting minus, then putting this value, x is what? X is a by root 2, a by root 2 into me 2 into me putting a by root 2. So this becomes a square minus 2a square. Okay, is 4 by 4 minus, now solving a by 2 root 2, and this is what 2, taking the LCM. 2a square minus a square become a square only by root 2 plus a square by 2, and cancelling, you can cancel x this, and this is a 1 by root 2 on 45 degree, 5 by minus, that become a square by 4 minus a square pi by a. Okay, so we can write this as, this become what? Taking a square by 4 is common. It becomes 2, 2 minus a square by 4 pi, that's a square pi only. Okay, that's taken common. We can write pi by 2. Okay, so therefore the area of smaller part of the circle is what we can do the double of. Okay, so that is what. So now the area of ABCD is the double of this one. Okay, so required area, that is what, 2 times of a square by 4 into pi by 2 minus 1, that is what, a square by 2 pi by 2 minus 1 square. Okay, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. The same we have done already. Find the area between the x is equal to y square, x is 4, divided into two equal parts by the line x is a. Find the value. Okay, same concept we have to apply, and we have the values. That is what, x is 4 in two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. Okay, taking this one is the center, and this one is the
x is equal to a, this line is x is equal to a, and this is the x is equal to 4. Okay, it means this is the 4 comma 0 and this one is the a comma 0. Okay, and this is y square is equal to x. Okay, now divided into two equal parts by the line x is equal to a. So x is equal to a, this line ने क्या किया, इस एरिया को जैसे प्रॉपर नहीं बन पाया, लेकिन ये जो एरिया है ये एरिया आपका नेमिंग कर देते हैं ओ ई एफ सी डी, ए बी सी। ओके, now the line x is equal to a divides the area bounded by the parabola and the x is equal to 4 into two equal parts. Okay, so area of OAD, area OAD, OAD is equal to what? That is equal to area ABCD, area ABCD by the question. Okay, जो ये एरिया आपका बना वो एरिया इसके इक्वल है। ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन काम चला लेंगे, बड़ा छोटा हो गया ना साइज। It can be observed that the given area is symmetrical about the x, तो ये एरिया इसके बराबर है। ओके, ये एरिया निकल गया तो ये अपने आप हो जाएगा, ये एरिया आ गया तो ये आ जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स। ओके, सो एरिया ऑफ ओ ई डी, एरिया ओ ई डी, that is equal to what? That is equal to area ई एफ सी डी। ओके, तो ये पूरा एरिया इस एरिया के इक्वल है, तो इसका जो सिमेट्रिक पार्ट, ये जो आपका एरिया होगा, ओके, ये जो आपका एरिया बनेगा, ये एरिया किसके इक्वल होगा, इसी इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। आपका ये एरिया इस एरिया के इक्वल आएगा, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, एरिया ओ ई डी इज इक्वल टू ई एफ सी डी, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट। तो ये एरिया देखिए जीरो से लेकर ए तक चला है, जीरो से ए तक, और ये क्या है, इसको टच कर रहा है पैराबोला। ओके, तो पैराबोला को टच कर रहा है, तो दैट इज व्हाट वाई। ओके, स्ट्रिप डी एक्स देना वो हम कर चुके हैं, वाई डी एक्स। ओके, so that is what, that is equal to 0 to a y in term of x, y in term of x क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स dx is equal to what, x की पावर 3/2 और 2/3, लिमिट हो जाएगी 0 to 2, 2 पुट करेंगे और फिर इसको हल कर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 पुट किया, 2/3, a की पावर, x को 2 पुट किया, 2 की पावर 3/2, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। ये ऐसे रहेगा आपके पास, ठीक है। और ये 2 नहीं, ए आपका, ये क्या है, ए, ये क्या आपका ए है, तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर 3/2। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, इसका एरिया, एरिया
area of EFCD. That is what. Now from this line A to 4, A to 4. This is what? Parabola. Again in term of x, that is under root x dx. Okay. So we have 2 by 3 x की power 3 by 2 4 to 0. पुटिंग 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 by 3 4 की पावर 3 by 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो ये आपका 8 आ गया. दैट्स व्हाट 2 by 3 8 आ जाएगा. ओके. तो ये एरिया आपका इस एरिया के बराबर है. ओके. And this one is equal to what? That is equal to 2 by 3 a की पावर 3 by 2. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है 2 by 3 कैंसिल हो गया तो 8 क्या आ गया a की पावर 3 by 2 आ गई. ठीक है. a की पावर 3 by 2. तो a को क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर a को हम क्या लिख देंगे a की वैल्यू क्या आ जाएगी a इज इक्वल टू 8 की पावर 2 by 3. ओके. तो उसको हल किया तो आंसर क्या है this one is a to 4 a and this one is a की पावर 3 by 2. ओके. सी. तो इसको हल किया तो 2 by 3 a की पावर 3 by 2 इज इक्वल टू 2 by 3 4 की पावर 3 by 2 माइनस a की पावर 3. ओके. सो 2 by 3 कैंसिल हो गया. a की पावर 3 by 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 by 2 माइनस a की पावर 3 by 2 ऐड किया डबल हो गया 2. a की पावर 3 by 2 इज 4 की पावर 3 by 2 हो जाएगा. ओके. सो a की पावर 3 by 2 क्या आ गई डिवाइड. सो 4 की पावर 4 by 2 की पावर 3 by 2 1 by 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा. क्या किया तो 8 आ गया. 8 by 2. ओके. सो a की पावर 3 by 2 क्या आ गया 4 आ गया. इट मीन्स आपका a क्या आ जाएगा a अपना आ जाएगा 4 की पावर 2 by. तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. दोनों एरिया थे तो एरिया क्या थे बराबर. ठीक है. फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए क्या था इस क्वेश्चन. भाई इसमें ये जो एरिया था ये एरिया इस एरिया के इक्वल था. तो हमने क्या किया इसकी लिमिट 0 टू a बनी. ओके. 0 टू a. और ये क्या है कर्व किसका है पैराबोला का. इन टर्म ऑफ एक्स कर दिया. उस वैल्यू को निकालें. सिमिलरली ये एरिया निकाला. ठीक है. ये एरिया निकाला a टू 4 तक a टू 4 और दोनों एरिया को बराबर रख दिया तो a की वैल्यू हमारे पास आ. ठीक है जी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला. ओके. तो पैराबोला हो ही गया. दिस वन पैराबोला y is equal to x and y is equal to modulo of x. That's what this the graph of y is equal to root x. Okay. Find the area. अब ये जो एरिया है ये एरिया हमने ये वाला एरिया और या ये वाला तो दोनों एरिया सिमेट्रिक होंगे
ये एरिया फाइंड आउट कर लें तो ये एरिया अपने आप आ जाए। ठीक, तो चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो, y is equal to x square given है, okay, and this is the what, this side is y is equal to x, question number one, and second one is y is equal to number two हो गया, y को x पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, x is equal to x square हो गया, या कहेंगे x square माइनस x is equal to 0, तो x कॉमन तो x minus 1 is 0, either x is 0 और x is 1, ओके। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ये क्या, ये आपका क्या आ गया है, यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक, तो ये पॉइंट अभी भी क्या है हमारे पास, 1 0, तो जब x1 होगा तो y क्या होगा, x1 होगा, x1 होगा तो y भी क्या हो जाएगा, 1। ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है। सिमिलरली ये एरिया इसके सिमेट्रिक, ओके, जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ये, एक तो ये एरिया फाइंड आउट करना है, ओके, और एक एरिया हमने ये वाला फाइंड आउट, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका, अगर इसकी नेमिंग कर देते हैं, दिस इज O, दिस पॉइंट इज A, this point is B, okay, so this center is O 0 0, see, simple. Now the area bounded by the parabola x square is equal to y, and the line y is equal to modulo x can be represented as the given area is symmetrical about y axis, so therefore इसलिए क्या होगा, एरिया जो हो, एरिया ऑफ ओ ए सी, तो ये एरिया किसके बराबर है, ओ सी, okay, taking this simple c and this simple d, okay, to show the curve, area of OAC is equal to area of OAB, area triangle OAB minus area OBACO, ओके। देखिए हम ये एरिया फाइंड, ठीक, ये एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ पर बन रहा है, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में से इस एरिया को अंडर एरिया माइनस कर देंगे, ये बात माइनस कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया अंडर द दिस कर्व, ओके। तो एरिया ऑफ ओ ए बी, तो इसकी जो क्या आ जाएगा, 1/2, ओके, बेस क्या है, इसका नेमिंग हम कर देते हैं, इसका नाम हमने दे दिया है, सपोज करते हैं इसको हमने दे दिया ए बी सी डी ई हो, तो क्या कहेंगे, ओ ए बेस इंटू में परपेंडिकुलर दैट इज ए माइनस में एरिया ऑफ दिस, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चलो, ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा ये कर्व कहाँ से चला, यहाँ से जीरो से, जीरो से लेकर कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा, 0 to 1, ओके, तो y dx, ओके, दैट इज y 1/2, ओ ए का मान क्या, ओ ए तो आपका 1 है, इंटू में ए क्या है आपका 1 है, माइनस में 0 to 1 y इन टर्म ऑफ x, देखिए ये आपका जो कर्व जा रहा है पैराबोला, तो y इन टर्म ऑफ x क्या कहेंगे,
एक्स स्क्वायर। ओके, dx सॉल्व। तो ये आपका 1/2 माइनस में एक्स क्यूब और 1/3 और 0 to 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल किया तो क्या मिला, इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1 पुट करें 1/3, 1 माइनस में 0 तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस में 1/3, दैट इज व्हाट 6 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आ गया। तो 1/6 आपका इसका एरिया आ गया, इसका डबल करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया क्या, रिक्वायर्ड एरिया इसका 2 टाइम्स कर देंगे, 2 ऑफ 1/6 दैट इज 1/3 स्क्वायर। ठीक है, कैसे किया एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। भाई हमें ये एरिया एक तो पैराबोला और एक y इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ एक्स, ठीक। तो दोनों ने जो एरिया बाउंड किया वो एरिया ये, ठीक है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया हमने देखा कि अगर पूरे ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, तो यहाँ पर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो पूरे का एरिया क्या बन गया, दैट इज 1/2 1 into 1। अब इस टोटल एरिया में से अगर एरिया अंडर करो, ये एरिया अंडर करो है, ठीक है ना, इस एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये लिमिट कहाँ से जा रही है, 0 से लेकर 1 तक। ओके, 0 से लेकर 1 तक ऑफ वाई डी एक्स, वाई इंटरम वाई एक्स ये हो जाएगा, सॉल्व किया तो आपका आंसर आ, ठीक है जी। सो द parabola is what, x square is equal to 4y, x square is equal to 4y, question 1, and the line x is equal to 4 minus 2. Okay, so because this line intersect the parabola, let's find the intersection point by putting x is equal to 4 minus 2 in this question, or simply we can put 4y is equal to x square. This will be simple, x is equal to 4y, 4y means x square minus 2. Okay, so this becomes x square minus x minus 2 is equal to 0. Okay, so make the fact 2 and 1, x square minus 2x plus x minus 2 is 0. What is the common? X is common, x minus 2, and taking plus 1 common, x minus 2, that is 0. So x minus 2 and x plus 1 is equal to 0. So this x plus 1. So intersecting point are 2 and minus. Okay. So when x is 2, what is the y? When x is 2, when x is 2, when x is 2, what is the y? X is 2, then 2 here, 2 and 2 4, y becomes 4. Okay, and when x is minus 1, when x is minus 1 equal to 4y minus 2, what is the y? Minus 1 plus 2, that is 4y, with minus plus 1, 1y 4, that is 4. Okay, when x is minus 1, y is 1 1. Okay, these what? These are the intersecting point. Okay, so where will be? This is 2
and this is the 1. Okay, so this is 2 comma 1. 1 is the intersection point, another one minus 1, minus 1, and this one is 1, and 1/4 we can take here. Okay. So draw the line. Okay, now it's okay. Now what is the required area? This one is the required area. This is the required area. Okay, so how we can find this one A? Okay, so this part we have to find out, one this part and another this. Okay, so from here to here, and this 2 comma 1, this should take 2 comma 1, so 2 is here. It's okay, that is 2 comma 1. Now we take 2. Now this area and this area we find out. Okay. So see how we can find the required area. Okay, taking the point. Take this point is A, and this one is the B, C, O. Okay. What is the line? Line is x is equal to 4 minus 2. So area. Okay, this we can remove. This part is not much useful. We can remove, or we can keep it also. Leave the part. So the area of OBE, area OBAO is equal to area OBCO plus area OACO. Okay, the required area, total area OBCAO. This area is equal in two parts. The one is OBCO, this area plus this area OACO. Okay, in two parts we can find the area equal to what? Now area of OBC. This how we can find this area? O OBCO. See, we can find this area minus this area under the curve.
then we can find this one. Okay, so we can write area OBC OBC O equal to area OMBC minus area OMBO. So see, this is what equal to area of OMBC. That is what, see, from here to here, from this to this is a line. Okay, so line, this is line. You can say from 0 to 2. 0 to this one is the line and line is this one. So line in term of x, what become x plus 2 divided by 4, x plus 2 divided by 4 dx minus, now this is curve parabola, minus 0 to 2 and this parabola in term of x, that is what y in term of x square y 4. Okay, so on solving we can solve it. 0 to x by 4. Okay, so 1 by 4 is common. What is the x square? X square and divide by 2 plus, what is the 2? 2 is 2x minus, and this becomes 1 by 4 is common, x cube divided by 2, 0 to 2. Okay, simply we can solve it. Yes or no? We can solve and we will get the value that will be equal to 5 or 6. Okay, you can solve it 5 or 6. And then similarly we have to find this area of line minus area of this. Okay, from where to where, this is what, this we found the intersecting point, and that was minus 1 and 1 by 4. Okay, so we can say the intersecting point we get, what was the intersecting point, that was minus 1 comma 1 by 4. Okay, so on the right side we can find now area. See, we have to find this area, we have to find out. So on same way we can find similarly area O A C O, this one, this area is equal to area O L A C minus area O L A O. Okay, so this one is what, again the same line is going, so we can put this one 0 to 0 to what, 0 to, sorry, from here to here, minus 1, minus 1 to 0. We write the limit now, minus 1 to 0 of x plus 2 by 4 minus, now again 0 to,
points 1 to 0 of this parabola in term of x, that is x squared by 4. Okay, so we can integrate, we can put the limit, upper limit, lower limit, and we get the answer that would be equal to what? On solving, we get 7 by 20. Okay, this answer will become 7 by 74. You can solve it. What is the required area? This A area, this B area, or adding both. The required area is what? 5 by 6 plus में 7 by 24, and that would be 9 by 8. 9 by 8 here. It's okay. Because integrating is simple, we have to understand the figure, intersecting point. Okay, so you can take the screenshot if you required. Okay, move to question number 11. Again, this is a simple find the area of the region bounded by the curve y4 and the line. The line is x is to c. Okay, simple. You can find out this area. Limit from here to here. You can find intersecting point. Okay, this is what 3 comma 0. Okay, so this you can simply solve. Okay, area lying in the first quadrant and bounded by the circle and the lines x is 0 and x 2 is 4. So we can solve and we can find the answer of this question. Okay, this both question you have to yourself try yourself because we done many questions. Okay, so this was the exercise 8.1 and we will do now in the next class exercise 8.2 examples. First we will do, then we will do it. Okay, see you tomorrow again on the same channel on the same timing 9 p.m. Keep sharing and watching the videos. Thank you. Good night.